Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So as you know that we are about to complete our module called data manipulation with data tables in the studio, and today we are going to be discussing some good 10 questions which can be asked in your examinations and can be asked in your interview as well. Let's get started guys. So let's quickly take the first question. What is the difference, key difference between data tables and the spreadsheets? So आपको पता है गाइस कि हम मैंने आपको बताया है डेटा टेबल के जो रो और जो कॉलम होंगे उनके इंडेक्सेस होंगे स्टार्ट आपके जीरो से एंड स्प्रेडशीट्स विल बी हैविंग नॉर्मली इंडेक्स ऑफ रो एंड कॉलम फ्रॉम वन. सो यहाँ पे हम ढूंढते कहाँ पे हमें सबसे पहले डिफरेंस तो ये है. अगर यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो वील फर्स्ट सर्च दैट ओनली सो दैट वी कैन सेव सम टाइम इन आवर एग्जामिनेशंस और इन आवर इंटरव्यूज. ठीक है. डेटा टेबल सेल्स आर आइडेंटिफाइड कॉलम लेटर रो नंबर स्टार्टिंग एट वन. ये पार्ट तो मैं लूंगा, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं. आई डोंट वांट टू गो अहेड बिकॉज यहाँ पे इससे पहले ही गलत लिखते हैं. ये पार्ट तो चाहिए. Relatable cells are identified through the column name or column index by row index both starting from 1. No, starting from 0. There is no particular difference. There is a difference. गलत. तो फिर यही आंसर है मेरा. आंख बंद करके मुझे वहाँ पे ये टिक करना है. अब रीड भी कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है. Variable cells are identified through the column name or column index by the row index, both starting from 0. A spreadsheet cell identified column letter and row number starting at 110%. It is correct. Right, next. What activity is used to create a data table from structured text by letting the user indicate row and column separators? अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है structured text, ठीक है. देखिए स्ट्रक्चर टेक्स्ट में क्या है, क्रिएट डेटा टेबल. तो पहले मैं आंसर नेगेट करूंगा कौन कौन से मेरे गलत आंसर हो सकते हैं यहाँ पे. रीड CSV डजंट अलाउ अस टू क्रिएट ए डेटा टेबल फ्रॉम स्ट्रक्चर टेक्स्ट, गलत. रीड रेंज, देखिए रीड से हमें दिख रहा है कि भाई ये क्रिएट नहीं करेगा डेटा टेबल फ्रॉम स्ट्रक्चर टेक्स्ट. It will just be reading a CSV or just reading a normal you can say workbook and उससे आपका डेटा टेबल यहाँ पे क्रिएट है, नॉट फ्रॉम द स्ट्रक्चर टेक्स्ट. अरे ऊपर से लिखा है बाय लेटिंग द यूजर इंडिकेट द रो एंड द कॉलम सेपरेटर्स, राइट. सो फर्स्ट इज द बिल्ड डेटा टेबल बट इट लिखा है बाय लेटिंग द यूजर इंडिकेट रो एंड द कॉलम सेपरेटर्स. तो गाइस बिल्ड डेटा टेबल में हम खाली क्या कर सकते हैं, कॉलम का नेम दे सकते हैं, कॉलम का जो डेटा टाइप है वो दे सकते हैं एंड वी कैन गिव सम वैल्यूज इन द कॉलम एंड रोज. बट यहाँ पे generate data table from text we can also provide the row and the column separators. For example, we can provide colon, semicolon, space, etc. from here. So this is the right answer, second part. Right, so I have told you the differences between all these, so I hope आपको समझ में आया होगा. Right, what are some of the activities that you can use to create a data table? Okay, that is tricky. अगर आपको नहीं पता है, अगर हमें पता है तो it's no issues. Create a data table. Now, read CSV will be output word. It will be creating a data table. Write range workbook won't be creating a data table. It will be expecting a data table. Build data table. Yes, it is also creating a data table. Read range workbook. It is also creating a data table. Generate data table from text. Obviously, ये मुझे दिख रहा है generate करा data table. So obviously this will be the answer. Submit. And we are 110% correct. Which activity would be your first choice to loop through all the rows of a data table? अब यहाँ पे they are making it a bit of a you can say confused. Why? I'll tell you why. Guys, it is saying that कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो डेटा टेबल के रोज को लूप करने में सबसे पहली चॉइस होगी आप लोगों की. सो इट इज रिटन फॉर ईच रो इन डेटा टेबल, get row item and filter data table. So as you can see the last two are definitely wrong because they are not a loop. There are three type of loop in UiPath: for each, while and do while, right? We can also use a loop from a flow chart, from flow diagram flow chart, but the main loops are for each, while and do while. So the main part is the last two are wrong. These two you can say are wrong, right? For each and for each row in a data table. So इसके first choice to do all the rows of a data table. अगर ना data table नहीं होता तो I would have chosen this the first part. But here it is written as data table. तो यहाँ पे हम लोग choose करेंगे data table because हमें पता है कि this part will only and only accept DT as a iterative
एज एन इटरेशन, राइट? जो आपका कंटेनर है विद टाइप ऑफ डेटा टेबल, राइट? नेक्स्ट, what activity can you use to write a data table to a string variable? सो द एक्टिविटी यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो डेटा टेबल को मैं स्ट्रिंग में बना सकता हूँ. राइट रेंज, नो. इट इज राइटिंग वैल्यूज टू शीट. जनरेट डेटा टेबल, नो. मर्ज डेटा टेबल नहीं, नॉट मर्जिंग. आउटपुट डेटा टेबल, यस. The output data table will be what? Creating the data table into a type of a string. We can use write line or log message activities to print the data into the output. Right? Submit. And we are correct. Right? How can we convert a data table to a string? Now we have to convert a data table to a string, guys. देखिए यहाँ पे क्या करना है, डेटा टेबल टू अ स्ट्रिंग. ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा. तो इट्स प्रीटी इजी. सेम क्वेश्चन लगभग लगभग वही है. इन्होंने आई डोंट नो दो बार क्यों पूछा है हमसे, बट ठीक है. व्हाट एक्टिविटी कैन वी यूज टू क्रिएट अ न्यू डेटा टेबल based on filtered values from an existing one? So it is asking that how we can create a new data table by filtering another data table. So obviously we have filter data table activity which will be filtering all the data table on an based on an existing data table and push it into a new data table. यहाँ पे लिखा हुआ है. So we'll be pressing submit and we are 110% correct again. What container do you need to add to be able to use modern Excel activities? So it's asking container which will be using to add model Excel activities. So guys, use application browser. It is a modern, but it is specifically asking for Excel activities. So no container is needed. No Excel application co. It is a container as well, but it is expecting what? It is expecting a modern activities. This is a container used for what? ये मैंने आपको बताया है. This is a container used for classic scope activities of Excel, but this is a container used for modern Excel activities called use Excel file, and we'll have to choose this one to get the correct 100%. So what is a data table variable? Okay, a type of variable that can store only strings. No. टाइप ऑफ वेरिएबल, देखिए मैंने आगे पढ़ा ही नहीं, उसके आगे मैं आगे गया ही नहीं. दिस इज द वे यू कैन सेव योर टाइम इन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू एज वेल. टाइप ऑफ वेरिएबल दैट कैन स्टोर बिग pieces of information and act as the data based on simple spreadsheet with rows and columns. Can be the answer. Let's see. We'll be reviewing it again. Second part, second answer. A type of variable used to store numeric information. They can be used to perform equations or comparisons, pass important data, and many others. A type of variable which enables you to store multiple values of the same type. Right? So, see, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हमारे पास जो आंसर होने चाहिए second part, because it is saying big pieces of information. Obviously, data table can store very big pieces of very large pieces of information, very large rows, columns, etc. And it can act as a database or a simple spreadsheet with rows and columns. But data table है क्या, आपको ध्यान रखना है data table का जो आपका रो इंडेक्स है, कॉलम इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, नॉट फ्रॉम 1. Okay, let's go. How can we combine rows from two tables by using values common to each other according to a rule? So we have to, this is the last question, we have to what? Combine two rows, right, by using values common to each other according to a rule. So what can be the answer, guys? Join data table can be sort, it will be just sorting, merge, just merging the data table, but no, not according to any rule, it is just merging. Okay, यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू अ रूल. लिख दिया है यहाँ पे कहीं एक रूल है, उसके अकॉर्डिंग मुझे ज्वाइन करना है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू डेटा टेबल्स and these two data tables there is the column called ID. There are two data tables, and in those two data tables there are two columns called ID. एक कॉलम हमारे डेटा टेबल 1 में है, एक कॉलम हमारा डेटा टेबल 2 पे है. So we have to join in accordance with these columns called ID. So this will be our primary key if you are an SQL user. आपका समझ में आएगा यहाँ पे. So we'll be using the using the join data table activity over here, and
are 100% correct. So you can see that we have completed our quiz and we have scored 100% marks. तो guys अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते. Right? Also, I am talking here as a motivation booster over here. Okay, so please read carefully. Please make your notes. Okay, whenever you are reading anything you are reading, please make your notes as well. Okay, and please before going to the examination, please revise your notes generously. Right. So with this, we have completed data manipulation with data tables in Studio. Another module, another success in our YouTube journey. Right. Okay, so next we'll be seeing, let's see, I think it's logging that we'll be seeing, just a sneak peek. Yeah, introduction to logging in the studio. So guys, very, very important chapter, right? Let's see what we have in here. Just a sneak peek, guys. So yeah, so we will be using logging, how to use execution logs, what are the logging best practices. We also be seeing a log machine exercise, but that won't be any typical, right? But yeah, it is what it is. So accessing and reading robot execution logs, everything logging best practices will be seen here, right? So with this we have completed another module and we are done with data table manipulations in Studio. Next is introduction to logging in Studio. I'll be seeing you in another video. Till then, happy automation and keep learning.